hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. So friends, today we are live again, and first we will do two listening and next we will do two writing. Okay, so let's study together. So first हम टू लिसनिंग करेंगे एंड नेक्स्ट टू राइटिंग करेंगे. ओके, मैं आपको एडवांस वोकैबुलरी बताते चलूंगा. जो भी बेसिक और एडवांस वोकैबुलरी हम करेंगे आज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. Yeah. So friends, let's get start. आप कहाँ जा रहे हो? I America going. Son of son there. Seeing him. इसे कहने का सही तरीका. Now turns to part one. Part one. You will hear a telephone conversation between a customer and a sales assistant at a shop that rents bicycles. First, you have some time to look at questions for what to say. Late return fees, £3 for extra. Deposit 300 accessories, £5 for lightweight and planet to handle water. Pump repair kit is strong. Insurance included but must pay first of claim. By pay card only. By pay card. Now we shall begin.
You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Hello, Clark Cycle Hire. My name's Keith. How can I help you? Oh, hello. I saw your ad in the local paper, and as I'm thinking of doing some cycling, I'm wondering what kinds of bike you have and what your prices are like. Well, we hire out two main types of machine, touring and mountain bikes. Are you likely to be riding off-road, do you think? No, I'll probably be sticking to roads and country lanes, so a touring bike would be best, I think. Right, well, the rate will be £50 for a week or £14 per day. So it's a lot cheaper to rent by the week. Yes, definitely. Though it's important to bring the bike back on time. Otherwise, I'm afraid we have to charge a late return fee. And how much is that? For each additional hour, it's £1.25. So if you were a day late, it would cost another £30. Yes, that's right. I'll make sure I didn't do that then. I should also point out there's a deposit which you get back when you return the bicycle, in good condition, of course. On touring models, it's £60. Is there anything else I'd have to pay? No, that's it. Though if you're planning to ride fairly long distances, you might like to have one or two accessories. Such as? Well, for another £5, we can supply lightweight bags, either panniers or the handlebar sort. It's amazing how much they can carry, and the way they're designed means they don't get in the way when you're riding. Well, I'll see. But what about essential things like a pump and a repair kit? I wouldn't have to pay extra for those, would I? No, there's no charge for things like that. Or for a lock. It's a good strong one too. Just make sure you don't lose the key. That reminds me, what about insurance? What happens if someone steals the bike, in spite of the wonderful lock? Didn't I mention that? Oh, I should have told you that's included in the rental too. And it covers everything, does it? It covers you against theft of the bike, yes, as long as it's securely locked at the time. You'd have to pay part of any individual claim, though. How much? If the bike was stolen and not recovered, you'd be liable for the first £100. So, if I do go ahead and rent one, how do I pay? By cheque or would it have to be cash? No, I'm afraid. We can only accept credit card bookings. Otherwise, we have to ask our customers for the full value of the machine as a deposit. I've got a Visa in my name. Would that be okay? Sure. Now you have some time to look at questions 8 to 10. Credit card. So, health center, Mirza Park, police station, district highway. I see. Now listen and answer questions 8 to 10. So if I want to have a look at the bikes, how do I find you? I live near the university, by the way. Right. First you take Woods Road as far as the main police station. I know it. It's right next to the park. Yes, that's it. And after the police station, there's a turning to the right called Oak Street. At the big supermarket. No, it's before then. It's actually between the police station and a garage on the other side. Okay. So, you go down Oak Street until you reach the health centre on the right. If you get to a pub called the Maple Leaf, you've gone too far. All right? Yes, I've got that. Now, opposite the health centre, there's a pharmacy, and we're just behind that. Okay, fine. I'll try to call over sometime tomorrow. Great. See you then. Bye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Supermarket, yes. तीनों सिर्फ 150 रुपए में 1 किलो चीनी ये 29 ऐड आ रही रुपए है। में नमक 22 रुपए में और फॉर्च्यूनर Going to hear a talk on What? cultural shock. What three First, things you have happened some in the time to first look at phase? questions 11 to 16. What three things happen? जी कौन सी तीन चीजें जो होती हैं in the first phase of culture? So gain and of new culture. Gain and new culture. This is new culture. As you achieve a new culture and prepare for the and say anything means scanner. And but will bear off in a second stage. But will bear any क्या कहने का second stage. Second stage second stage
and but emotionally Now listen to the move tape third phase. and answer the questions. 11 to 16. System. Hi, congratulations on finishing orientation for our study abroad program. Before you all head off to your respective countries, however, I want to first share with you a little bit about dealing with culture shock. Recent studies in intercultural experience have shown that there are distinct phases of adjustment which virtually everyone who lives abroad goes through. You will be the exception. The first phase of culture shock includes gaining an awareness of the host culture, preparing for the journey, and farewell activities. You're all experiencing this right now. The second phase begins when you arrive in your new country and ends when the excitement of the early experiences wear off. When you first get there, you will be overwhelmed. Initial impressions convey a sense of monumentality of the experience. You'll love it. During the third phase, you will start taking a more active role in your setting. This will produce frustration because there will be some difficulty in coping with even the most elementary aspects of everyday life. I remember not being able to find a toilet one day because I forgot the word for bathroom. Anyhow, your focus will shift during this phase to the differences between your new host culture and your home cultures. This can be troubling, but these sometimes insignificant difficulties can be blown into major catastrophes. That's why the stage is most often referred to as culture shock. Now look at questions 17 to 20. As the talk continues, What answer two questions things will 17 you to begin 20. to do for the stage? But relax. What When this two stage is things over, you will will slip you into the do gradual if you adjustment are stage. overwhelmed? You may not even be aware that this is Stages in happening. environment. You will just begin to orient yourself and to interpret subtle cultural clues. The culture will become familiar to you, and you'll start to feel at home. The next phase will be your discovery that you have the ability to function in two cultures with full confidence, and you may even feel completely integrated into your new host culture. In this phase, you will also start to have a sense of shared fate concerning events abroad. The last stage is the re-entry phase when you return home. This can be for some the most painful phase of all. You will be excited about sharing your experiences, but you will realise that you have changed and won't be able to explain how or why. One set of values has already been instilled in you, another you will have acquired in your host country. Both may seem equally valid. It is important that you realise that all of these phases are a natural part of adapting to a new culture. Expect peaks and valleys during your stay, and feel free to discuss your feelings with the resident director. These culture shock phases tend to occur even with relatively short stays abroad. During your stay, if you feel a wave of bewilderment wash over you, remember this little talk and look back at your notes. One very typical reaction against culture shock is the tendency to hang out with other Americans. Remember, you are coming to a foreign country to get to know her people, language, and culture better. If you avoid contacts with the foreign language, you cheat yourself and lengthen the process of adaptation. This is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Two university students discussing a social science lecture they attended. First, you have some time to look at questions 21 to 24. What aspect of history is it important to learn something from? What do we also need to know about the ancestors? Where transferable skill useful? What kind of approach to learning does social science use? What kind of approach to learning does social science use? कौन सी approach होती है? Where are the controversies? Now listen carefully and answer questions 21 to 24.
Did you go to the first social science lecture yesterday? Yeah, did you see me there? No, I was trying so hard to understand the lecturer. What did you understand? A lot of it, really. For example, he said we needed to study history as part of the course, but I didn't get why. You probably missed it. He said early on that we need to learn from our past mistakes. Right. But he also said we need to put ourselves in the place of our ancestors. Why is that? I think the point is that it's not enough to know how they lived and what they did. We need to know what they thought. I see. And I've written transferable skills in my notes next, but I have no idea what that means. When you study social science, you learn skills that you can use in a job. Oh, right. Is that all? Okay. But why is that? The point he made was that in studying social science, you use a flexible and adaptable approach to learning. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Anthropology, economics, education, geography, law, and sociology and social work. And this will focus on how each generation learn about its own culture. सब इतना जल्दी बोलते हैं मैं समझ नहीं पाता I'll speak with you at Anthropology. Anthropology. Anthropology यानी कि this will focus on Now how listen and answer questions 25 to 30. He also kept mentioning all the other subjects we will need to study as part of the course. I didn't write them all down, did you? Some of them. I think I can make sense of my notes. The first one was anthropology, which he said would cover prehistory and archaeology as well. Okay. Then there's economics. I wrote down that this was not meant to mean that we will spend all our time looking at economic theory, but rather we need to see how humans behave. That's good. I don't think I could handle economic theory. He said something about education too, did he? Yeah, he said we'll be looking at how cultural information is handed down from one generation to the next through teaching children. He said we be focusing on geography too, but I can't really remember which aspects. Can you? I noted it down, I think. Here we are, yes, particularly in relation to urban planning. It's law that I got confused about. I didn't understand why he linked that to economics. I think he meant that laws affect the way wealth is distributed. That makes sense. Now, what are the science wars? Okay, I did get that. The science wars are about how social science collects information in sociology and social work, and in social science generally, they can only study patterns of behavior and observe. And when you compare that to the way scientists work in physics or chemistry, it's very different because they use specific experiments that can be tested and which give concrete answers. Social studies is often accused of being unscientific. That's all. Okay, but it still looks like a good course, doesn't it? You don't have any regrets, do you? I'm looking forward to it. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. What expect? Babacon and Bonnie, a female pirate. First, you have some time to look at questions 31 to 35. Married a man, James Van, who tried to steal her father. James earned money by Calico offered to the white James that he was Calico was away together.
listen to the tape and answer the questions 31 to 35. Anne Bonny was one of the two most famous female pirates. She sailed on the crew of Calico Jack Rackham. Anne was romantically involved with Calico Jack, but she could be counted as nonetheless as fearless as any other pirate. She was born in County Cork, daughter of an attorney and his maid. The lawyer Calico Jack, but she could be counted as nonetheless as fearless as any other pirate. She was born in County Cork, daughter of an attorney and his maid. The lawyer left Ireland in disgrace, but found fortune in the Carolinas. There, he amassed a fortune and bought a large plantation. A ne'er-do-well pirate sailor named James Bonny married Anne in an attempt to steal the plantation, but Anne's father instead disowned her. Bonny then took Anne to the Bahamas, where he turned informer to Governor Woodes Rogers, turning in any sailor he didn't like as a pirate for a handsome reward. Anne quickly grew to dislike her spineless husband and quickly caught the eye of one Calico Jack Rackham, a pirate of some renown. Governor Rogers had recently passed an amnesty for pirates, which left Bonny out of work. The admiration between Anne and Calico was mutual. Calico Jack was a handsome man who knew how to spend money as well as steal it. Anne was a well-endowed lass with a fiery spirit and a temper that matched that of any man. In any event, Calico offered to buy Anne from Bonny, but Bonny instead took the matter up with Governor Rogers, who said that Anne was to be flogged and returned to her true husband. That night, Calico and Anne slipped out in the harbour, stole a sloop, and began a life of piracy together. Now look at questions 36 to 40. Anna wasn't expected with the culture. She was fearless as any man. She was often a member of team that ships and was captured by surprise and disappointment that her crew found light. Two other women and Andy were also pirates alongside. Get minimum 60% off on top ethnic wear brands this Raksha Bandhan. Only on Metro Festive Bash. Shop now. मुझे कभी नहीं लगता था कि बीकॉम के बाद मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, वो भी किसी टॉप एमएनसी, क्योंकि ऑनेस्टली Answer questions 36 to 40. Anne fought in men's clothing, was an expert with pistol and cutlass, and considered as dangerous as any male pirate. She was fearless in battle, and often was a member of any boarding party. In October of 1720, retribution was close at hand. The governor of Jamaica, hearing of Calico's presence, sent an armed sloop to intervene and capture the captain and crew. Calico's ship, Revenge, was caught by surprise, and much to Anne's dismay, the pirates fought like cowards and were taken far too easily. Anne and Mary Read were also captured, but upon capture, confessed their sex and pleaded to be tried separately after they gave birth. Both women were pregnant at the time. Both received separate trials from the men, but were still sentenced to hang. Mary Read escaped the hangman by dying from fever while in jail. Anne, however, received several stays of execution before mysteriously vanishing from official records. It is believed that her father, who had contacts in the island, forgave his daughter for her acts and ransomed her back to the Carolinas, where she assumed a new name and a new life. This is the end of section 4. You now have half a... £14, 1.95, 60 bats, look hello, CP चाहिए 100 credit, EAC चाहिए, and journey चाहिए, and 11th one is awareness, and 13 is farewell, yes, recently farewell, your exciting calls, and 15 frustration, 16 third, 16 one is third, 16 one is third, 17 orient yourself false, 18
interpret culture. Culture noun false. 19. Remember the stop. And 20 false. And 21 past mistake true. 22 thought. 23 in a job correct. And 24 flexible and adaptable. Flexible and adaptable. F C H H H F C F C A H E G G. Canicot. Canicot. 31 is island. Okay, 32 Catalog. Plantation. So and 39 is pregnant. Yeah, 39 pregnant. We are in pregnant. And 40. 38 coverts. 38 covert. 38 coverts. 38 coverts. And 36 pistol. 36 pistol. Steel pistol. 34 turning. Familiar false. 35 plugged. 35 plugged. 35 dramatically false. 37 boarded. 37 boarded. So called false. So false. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25. अगले 2 हफ्ते इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, बस रोज 15 मिनट। 2 हफ्ते खत्म होते होते तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। 25, 25, 25, 25. So friends, I just got 25 marks. I am practicing listening for nearly 1 month, but I felt really very tough. Literally, today's exam is very tough. 25 marks I got. पता ही नहीं चल रहा है कि मिस्टेक कहाँ करी। लिसनिंग भी सही करी एंड जो वोकैब भी सही लिखी, फिर मिस्टेक कहाँ हुई यही तो देखना है। ट्राई से सही दिखाई नहीं दे रहा। चलो एंड फ्रेंड्स करते हैं सेकंड लिसनिंग। लेट्स चेक आउट उसमें कितने मार्क्स आते हैं। ओके एंड स्टार्ट सेकंड लिसनिंग। सो इसमें वोकैबुलरी हमने जो देखी है, इसमें वोकैबुलरी फर्स्ट हमने देखी है फेमिलियर, जैसे कि आप जानते हैं यानी किसी से परिचित होना। फेमिलियर मीन्स यानी कि परिचित होना। एंड सेकंड हमने देखी है फियरलेस यानी कि लीडर। ओके एंड फिर हमने देखा है डेफिनेटली, आप जानते हैं। एंड प्रोबेबली शायद, प्रोबेबली शायद, ये भी बेसिक वर्ड आप जानते हैं पहले से। एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन यानी एक्शन लेना, यानी एग्जीक्यूशन करो। एग्जीक्यूशन यानी टेक एक्शन। एंड अच्छा, यहाँ एक हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस यानी कि ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। बस आज हमने इसमें 5 वोकैबुलरी देखी और 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे। अब देखते हैं सेकंड लिसनिंग में। ओके सेकंड, so let's start. Between a student and a clerk. First, you have some time to look at questions 1 to 5.
Mike, isn't it? Yes. And you... Phoebe. Phoebe, right. Where are you headed? I'm looking for the main hall. So am I. Well, Are you going there to register for next year? Yes. I was told to go to administrations and fill in an application form. That's what I'm about to do. I went to information, and they told me it was at the end of this corridor. Then we have to turn left and immediately right. That should lead us to the exit, where opposite we should find the entrance to ground level main hall. It's a big old red building. From there, we need to go to the first level and then follow the signs. Apparently, it's the second office opposite the foyer. It would be pretty hard to miss. That sounds easy. It shouldn't be too hard to find. Well, since we're both heading in that direction, let's go together. Hopefully, it won't take too long. I haven't had anything to eat and I'm starving. Me too. Well, how about I go to the canteen and get us something while you make your way to the main hall? I'm sure there's going to be quite a wait. There always is. I can meet you there. Sounds like a good plan. What do you want me to get you? How about a chicken and salad roll and a drink? Okay. What if they don't have a chicken and salad roll? Anything similar, like ham and salad, or just plain salad and cheese. Oh, don't forget the drink. I feel so dehydrated. No problem. What type of drink? I don't know. How about a Coke? No, nothing like that. Something healthier. An orange juice? They're usually full of sugar unless you get it freshly squeezed. Water? Yes, that's perfect. Here, take £2. That should cover it. If it's more, I'll give it to you when you get back. I only have a 20, and you know that they get cranked perfect. Here, take £2. That should cover it. If it's more, I'll give it to you when you get back. I only have a 20, and you know that they get cranky if you give them large notes. Okay. See you in 5 minutes. Before you hear the second conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. name of the student, time, courses. What did Mike buy a good? मुझे पता करना है आप किस दाम में राशन खरीद रहे हो भाई ये बाथरूम का रिफाइंड ऑयल मार्केट में आपको कितने पड़ता है What must the student do part of the registration of the university? What must the student do part of registration at the university? Let's see. Name of student. Name of student. Now listen and answer questions 6 to 10. Hi, I'm here to register for first year economics. I just have to fill out this form for our records. What's your name? Phoebe Pang. Can you spell that for me? Sure. Phoebe. Your address? 6 Wainwright Avenue. That's WAINWright, Nottingham. And your phone number? It's not connected yet. I've just moved in. Okay. When you get your phone connected, contact us. I'll just make a note that your phone number is to be advised. I'll do that. What course were you doing? Law? No. Economics. First year. First year economics. Yes, that's right. Okay. Take this card across to the economics department and get it stamped. And then you need to come back here to pay your fees. I've made an arrangement to pay in installments. Do you have any documentation verifying that? Yes, I have a statement from administration. Okay, when you return, we'll have a look at it. Thank you very much. Here you are. It was quicker than I thought, but I have to get this card stamped and return here to organize my fees. That's good. It means that I won't have to wait long either.
How did you get on? What with? Oh, the food. Well, there wasn't much left, so I got you a cheese and tomato sandwich and water. Well, that's fine. Do I owe you any more? No, I need to give you back £3. But I only gave you 2. Oh yeah, I thought you gave me a fiver. Okay, so we're square. So what do I have to do? Go to the desk and give your personal details. Then they'll give you a card that you need to take to your faculty. What's your major? Environmental science. Okay, so you'll have to take the card to the environmental science faculty and get the card stamped, return to administration in the main hall, and organize your fees. And that's it. Yes, that means you're registered. Then we receive a letter with the details of our course where we'll be informed to go to the notice board or online to find out when and where our lectures are. Okay, let's have this bite to eat first. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. But when does the tour finish? Which area is not shown in the tour? Which landmark does the tour guide recommend tourists should visit? 14 17. Didn't use climbing wall, coastal hopping, and wine tour. That's it. Now listen carefully and answer questions 11 to 17. Welcome to San Fernando City Tours. I'm Mark, your tour guide. We have a lot to see in 3 hours, so make sure you're comfortable. We'll be traveling into the historical district first, then into the town center. After that, it's out to the harbor, and we'll finish up at the lighthouse, just past the harbor. That will take us up to midday, and after that, you're free to do what you want. At the lighthouse, you'll have a chance to visit the tea room and take photographs of the magnificent coastline. Now, as we have only 3 hours, we won't be able to take you around the shopping district, but we think you'd prefer to look around the shops there in your own time anyway. San Fernando has some well-known tourist attractions, the lighthouse, for example, and the National Library. However, the little-known military museum is not to be missed. Be sure to visit before you leave. Now, there's a lot to do in San Fernando. Indeed, there really is something for everyone. For those who love the water, I can recommend a trip on the Seafarer, one of the most famous boats on the San Fernando River. It does an evening trip with a 3-course meal included. It's great fun for everyone, but especially for young people in their teens or 20s. After 9, there's a disco on the boat, and it gets really lively. Then there's a climbing wall near the town center. It's incredibly popular, with a large wall for expert climbers and a small wall for novices. There's a junior wall and a creche, so it's a great day out for those of you with kids. And if you like walking, there's some great walking tours. The City Sights tour is highly recommended, as is the walking tour by the coast. But that one's only for the fit, not really suitable for children or the elderly. For more mature people, or those less able to get around, I would suggest a tour around the vineyards. It can be done in the luxury of a coach, and it's a wonderful way to explore the region's wines. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 18 to 20. Get an application form from head tour office with a fee. So मुझे तुम्हारी इंग्लिश न बोल पाने की वजह से the foreign client has cancelled the deal. I try, sir, but client not able Hindi. An hour passed.
If you don't have a pass but would like one, the driver here has application forms. Just ask him for one and fill it out while on the tour. Then you hand it into the tour office. Normally, it costs $10, but this year it's just $7. When you hand it in, you'll get your picture taken for the card on the spot, and then your card is ready to use. Remember to show it whenever you pay for anything. The discounts apply not just to tourist attractions, but some bars and restaurants. Basically, everywhere you see a red Explorer symbol. We're coming up to the historical district now. If you'd like to look at, That is the end of part 2. you now have half a minute to check your answers. 21. Good questions 21 to 24. That what surprised you was that sadly for the coronavirus, London became a highly commercial city, because London was moving a separate, more natural station where anything habitat for traders. Living was a total event. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Hi, David. How are you going with your history studies? Very well. I've actually finished it. That's great. What era did you write on? I researched Roman London, something I never thought I'd be interested in. That sounds interesting. I wanted to tie it into the work I've been doing on engineering, and I found it fascinating. I've learned many things along the way. Such as? Well, although there were prehistoric settlements throughout the vast area now called London, strangely enough, no evidence has yet been found for any such community at the northern end of London Bridge, where the present city grew up. The origins of London lie in Roman times, right? Right. When the Romans invaded Britain in 43 AD, they moved north from the Kentish coast and traversed the Thames in the London region, clashing with the local tribesmen just to the north. It has been suggested that the soldiers crossed the river at Lambeth, but it was further downstream that they built a permanent wooden bridge just east of the present London Bridge. In more settled times, some 7 years later, as a focal point of the Roman road system, it was the bridge which attracted settlers and led to London's inevitable growth. So, London Bridge has been there for hundreds of years. Yes, and though the regularity of London's original street grid may indicate that the initial inhabitants were the military, trade and commerce soon followed. The London Thames was deep and still within the tidal zone, an ideal place for the berthing of ships. What other industry did they have? Well, as the area was also well drained and low-lying, it was geologically suitable for brick making. There was soon a flourishing city called Londinium in the area where the monument now stands. Londinium? That's Latin. That's what I thought too, but the name itself is Celtic, not Latin, and may originally have referred merely to a previous farmstead on the site. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. During the Bika from part of England being called the center of, and forum was much bigger than in Wath. Wath was a regular support, and the administration in Britain was divided into two regions in 200 AD. What were their capitals? 200 AD, 200 AD, 100 AD. Now listen and answer questions 25 to 30. Wasn't London burnt to the ground at some stage? It happened in AD 60 by the forces of Queen Boudica of the Iceni tribe from modern Norfolk, when she led a major revolt against Roman rule. The
governor, Suetonius Paulinus, was busy exterminating the Druids in North Wales, marched his troops south in an attempt to save London, but seeing the size of Boudicca's approaching army, decided he could not mount an adequate defence and evacuated the city instead. Not everyone managed to escape, though, and many were massacred. What about the beautiful old architecture? Did you research that too? I sure did. The major symbol of Roman rule was the Temple of the Imperial Cult. Emperor worship was administered by the Provincial Council, whose headquarters appear to have been in London by AD 100. A member of its staff, named Cletus, buried his wife on Ludgate Hill around this time. Pagan worship flourished within the cosmopolitan city. A temple to the mysterious Eastern god Mithras was found at Bucklersbury House and is displayed nearby. I quite like St. Paul's. Traditionally, St. Paul's Cathedral stands on the site of a temple of Diana. Other significant buildings also began to appear in the late 1st century, at a time when the city was expanding rapidly. The Forum, a marketplace and basilica which housed the Law Courts complex at Leadenhall Market, was erected and then quickly replanned as the largest such complex north of the Alps. The Forum was much bigger than today's Trafalgar Square. Who was in charge of all the town planning at the time? Procurator Agricola. He encouraged the use of bathhouses and had a grand public suite made, which has now been excavated in Upper Thames Street. They were as much a social venue as a place to bathe. There was a smaller version at Cheapside, and in later centuries, private bathhouses were also built. Another popular attraction was the wooden amphitheatre, erected on the northwestern outskirts of the city. It's possible that gladiatorial shows were put on here, though lesser public sports, like bear baiting, may have been more regular. I thought that happened mainly in the Colosseum in Rome, but I guess London being settled by the Romans explains their lust for blood. By about AD 200, the administration of Britain was divided in two. York became the capital of Britannia Inferior and London of Britannia Superior. Around the same time, the city also acquired its famous walls, probably about 20 foot high. Why did they build such high walls? It was a protective measure, which may have been due to civil war, initiated when Governor Claudius Albinus tried to claim the imperial crown in Rome. Was paganism still predominant then? Yes, but Christianity appears to have reached the province at an early date, and only a year after the religion became officially tolerated in the empire. London had its own bishop, Restitutus, who is known to have attended the Imperial Council of Val. You really delve deep. I think you'll do well in your tutorial paper. Good luck, David. Thanks. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. क्या ऐप है PW Talk? फिजिक्स वाला पता है ना, उनकी ही ऐप है इंग्लिश बोलने के लिए. मैंने पहले किताबों से YouTube same watch. Watch को नाम है. Again, same thing. Information shared about lecture which are information informs what transfer. Now listen carefully and answer questions 31 to 40.
Okay, now today we're looking at changes in communication, and specifically changes that have just happened or are likely to happen in the next few years. Key to this is the mobile phone, which is increasingly being seen as an all-purpose system rather than just a phone. If you only use your phone for texting and making calls now, you will be amazed at how you'll be using it in the future. The technology has been developed for a range of other uses. For example, phones could be used so that if you are meeting someone and they get lost, you could send them a map of your location to help them. This will save all those complicated explanations over the phone and our poor friends or colleagues trying to drive and find out where they are at the same time. And if you get bored waiting, or if you're traveling, for example, you will soon be able to see TV news on your phone as it is actually being broadcast. This means that you won't have to miss any of your favorites if you are away for a few days. Most people have got used to texting now, and young people send pictures to each other. But what is exciting is the possibility of putting music with them before you send them. But it's not all frivolous. Phones are going to become even more critical in business and education. Some recent developments have a highly practical usage. So, for example, as lecturers, we will be able to send everybody a text to let them know if lectures have been canceled. The new phones could have a further use in education as well as business, as they will enable us to go to any destination, such as when we are doing a field trip, for instance. And from there, to send data directly to a computer so that we can access it when we get home. This means we will no longer be limited by what the phone can store. And it's interesting to look at the different ways that men and women use phones now, as that does affect how the technology will develop. Some research has been done on how people use phones, and some of the results are surprising. One of the increasing usages of mobile phones is to get all sorts of data, such as phone numbers, the weather, train times, etc. And while there's been an attempt to set up connections with things that women might be interested in accessing, it is overwhelmingly men who do this. But what about the traditional use of a phone? To speak to people. I suppose we would predict that it is mainly women who use phones as a method of contact for friends and family. But, in fact, the genders exploit this facility equally. I've spoken about the increased business usages that phones will offer, and I suppose we would associate this usage with men. The survey picked up, though, that women are often working from home or catching up with work in the evenings, so they use phones in this way as much as men do. Most of us are aware we can store photos on our phones. It's an ideal method of capturing a moment wherever you are. Women tend to be the group that keep photos on their phones, but it seems that men use their phones to actually take pictures much more than women do. And of course, all this knowledge affects the marketing that the companies will do in order to sell them. That is the end of part 4. If you now have half a minute to check your C, B, A, C, E, Korea, economics, seven, nautical, economics, CA, and literature. And literature started say CB, and two rows. The driver, right? 7 चाहिए
20 का डिस्काउंट है, सही है। 22 22 23 का सी है, 24 का सी है, 25 एंड 28 का डियर बेटी, डियर बेटी, डियर बेटी, 29 80 30 सही है। 31 मैप, टीवी न्यूज़, 32 टीवी न्यूज़ एंड कैंसर टाटा टाटा 36 बी, 37 सी, 38 सी, 42 31 1 चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31. Friends, I got 31 marks. Yeah, this one is easy. So both is थोड़ा बेटर लगा, थोड़ा इजी लगा। इसमें भी थोड़ा फॉल्ट हो गया है ना, मैंने आंसर यहाँ लिख दिया बट मैं यहाँ टाइम टू टाइम में यहाँ नहीं लिख पाया। 12 का नहीं लिख पाया, 31 का नहीं लिखा। चलो तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी वोकैबुलरी की बात करते हैं। हमने इसमें कितनी वोकैबुलरी राइट डाउन लिखी। एंड तो फर्स्ट लिखी हमने इंस्टॉलमेंट आप जानते हैं बेसिक है, जब भी हम कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो वहाँ फीस जो होती है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ फीस है 1 लाख, तो आप एक बार में जमा कर सकते हैं, बट वहाँ एक इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस होता है कि आप 1 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में आप सारी कंप्लीट फीस पे कर सकते हैं। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ओके। एंड फिर हमने देखा मेजर आप जानते हैं, माइनर या मेजर यानी कि कहते हैं मेजर रोल प्ले करता है, नहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंट आप जानते हैं, यानी आवश्यक, यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे कि इम्पोर्टेंट होता है उसके हम एडवांस वर्ड कितने करते हैं। फर्स्ट है क्रूशियल, ठीक है, क्रूशियल का मीनिंग भी होता है इम्पोर्टेंट यानी जरूरी है। एंड सेकंड एंड वाइटल, ठीक है, वाइटल। एंड आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। एंड फिर हमने देखा ट्रेडिशनल आई होप आप जानते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, जो परंपरा चलती आ रही है। एंसाइंट यानी कि प्राचीन, ANCINT एंसाइंट, यानी कि प्राचीन। अच्छा, हम पूर्वजों को क्या कहते हैं, एंसेस्टर, ANCESTORS, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा थे सब कहते हैं एंसेस्टर यानी पूर्वज, पहले जमाने के लोग, यानी एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, ओके। एंड फिर हमने देखा इनक्रेडिबल, कहते नहीं इज एन इनक्रेडिबल पर्सन, तो इनक्रेडिबल आई होप आप जानते हैं। एंड दैट्स परफेक्ट, ये सही है। फोबिया यानी कि डर, ठीक है, आपके पास आपको किसी चीज का भी डर हो सकता है। आपको ग्लासोफोबिया हो सकता है, आपको एक्यूफोबिया हो सकता है, आपको पानी में जाने से डर लगता है, तो कहते हैं एक्यूफोबिया, ठीक है। फोबिया यानी कि डर, आपको कोई से भी डर हो सकता है। एंड सेकंड टूवर्ड्स आप जानते हैं, यानी की ओर। आई विल गिव माई 100% टू गेट सक्सेस टूवर्ड्स माई गोल, मैं अपना 100% दूंगा सक्सेस होने के लिए, अपने गोल की ओर, यानी टूवर्ड्स माई गोल, अपने गोल की ओर। एंड एंड ट्रांजिएंट मैंने आपको बताया था, ट्रांजिएंट क्या है, टेम्पोररी का एडवांस वर्ड है ट्रांजिएंट, यानी कि स्थायी, ओके, हम कर चुके हैं।
रैपिडली, रैपिडली यानी कि तेजी से, ठीक है। फास्ट, रैपिड, यानी रैपिडली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। रैपिडली यानी कि तेजी से, एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स इनक्रेडिबल लॉट ऑफ फ्लड्स पब्लिक स्पॉट सिंबल नेशनल रिचुअल, आप जानते हैं ट्रेडिशनल रिचुअल, ठीक है, रीति रिवाज जिसे हम कहते हैं रिचुअल, एंड मेजर, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे राइटिंग, ओके। अब हमने टू लिसनिंग कर ली, नेक्स्ट वी विल डू टू राइटिंग, ओके। सो टॉपिक मंगाते हैं चैट जीपीटी से, आज हम क्या लिखते हैं। कल हमने सोशल मीडिया पर लिखा था, लेट्स सी आज हम किस पे लिखते हैं। टॉपिक राइट, आज हम लिखेंगे एजुकेशन के ऊपर, यू नो सम पीपल थिंक, मैंने आपको बताया था थिंक, जब भी हम थिंक की बात करते हैं, थिंक यानी कि सोचना, या सम पीपल बिलीव यानी भरोसा करते हैं, तो हमें एडवांस वर्ड यूज करना है। अब ये जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये बेसिक वोकैबुलरी लिखी हुई है, आप इसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, बट हमें जो लिखनी है वो एडवांस वोकैबुलरी लिखनी है। सम पीपल थिंक यानी कि कुछ लोग सोचते हैं, दैट की स्टूडेंट शुड स्टडी यानी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को, दैट आर यूजफुल फॉर देयर फ्यूचर करियर, ये यूजफुल है उनके फ्यूचर करियर के लिए। वाइल, जबकि, वाइल का मीनिंग है जबकि, अब लिख सकते हैं यू नो वाइल, WHIL, वाइल, वाइल यानी कि जबकि। अदर बिलीव यानी कि, अदर बिलीव यानी दूसरे बिलीव करते हैं, नहीं भरोसा करते हैं, दैट स्टूडेंट कि स्टूडेंट शुड स्टडी अ वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एंड डिस्कस बोथ व्यू यानी हमें डिस्कस करने हैं बोथ पर्सपेक्टिव व्यू, गिव योर ओन ओपिनियन यानी हमें अपना ओपिनियन देना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या स्टूडेंट को ओनली सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ओके। तो हम लिखते हैं, ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट हम एजुकेशन के ऊपर लिखते हैं, ओके, एजुकेशन। अब क्वेश्चन से समझे थे, क्वेश्चन क्या कहता है, सम पीपल थिंक यानी कि कुछ लोग सोचते हैं, हमें हमें यहाँ से अपने थॉट यू नो लिखने हैं। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, हम लिखेंगे देयर मैनी पीपल, बस हम इसके सेंटेंस के ना फ्रेम को चेंज कर देंगे। देयर मैनी पीपल आर्ग्यू दैट, या हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर मैनी पीपल रेकन दैट, देयर मैनी पीपल डीम दैट, देयर मैनी पीपल कंकर दैट, ठीक है। बहुत से बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, सम पीपल थिंक यानी कुछ लोग सोचते हैं, तो हमें लिखना है देयर मैनी पीपल, देयर मैनी पीपल होता है, ठीक है, देयर मैनी पीपल, देयर मैनी पीपल, देयर मैनी पीपल हम लिखते हैं थिंक, यहाँ थिंक दे रखा है, हम लिखेंगे आर्ग्यू, देयर मैनी पीपल आर्ग्यू दैट। अब क्या आर्ग्यू करते हैं, अब वो लिख देंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट शुड फोकस यानी कि स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, डेट और डायरेक्टली, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वोकैब अभी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, मैं बस जस्ट वोकैब चेंज कर रहा हूँ, मैं एडवांस वोकैब लिख रहा हूँ, ओके। ठीक है, अब हमने लिख लिया, अब हमने लिखा है देयर मैनी पीपल आर्ग्यू यानी बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं, डेट की स्टूडेंट शुड फोकस ओनली ऑन सब्जेक्ट, स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए ओनली सब्जेक्ट पर, डेट आर डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड है टू देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर से और कैरियर से, एंड वेयर एज
That student are improve subject. See, compare, discuss, what. ठीक है, लास्ट में हमें लाइन में लिखना दिस एसे विल डिस्कस बोथ व्यू, यानी ये ऐसे जो है हमें डिस्कस करेगा बोथ व्यू, ठीक है, उन दूसरे का नजरिया बताएगा, अपना नजरिया बताएगा, हमें अपना पर्सपेक्टिव भी देना है, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं हम सेकंड नोट की ओर, ठीक है। before explaining why I believe, यानी बिलीव की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रेकन लिख सकते हैं, और इसमें क्या दे रखा है, फ्यूचर कैरियर, ठीक है, फ्यूचर कैरियर एंड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी एक्सप्लेनिंग व्हाई आई बिलीव, ओके, हम बिलीव की जगह रेकन कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट ठीक है। तो फर्स्ट पैरा जो है हमने ये क्वेश्चन से पुट अप करा है, ठीक है, हमने एडवांस वोकैबुलरी यूज करी है, और ये बस हमने ये लाइन ऐड करी है, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यू, यानी ये ऐसे जो है डिस्कस करेगा बोथ व्यू, बिफोर एक्सप्लेनिंग, यानी एक्सप्लेन करने से पहले व्हाई आई बिलीव, मैं क्यों विश्वास करता हूँ स्टूडेंट शुड रिसीव अ वेल राउंडेड एजुकेशन, यानी ठीक है, वेल राउंडेड एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। अब हम लिखते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ एक नो पिकअप लाइन यूज कर सकते हैं, एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस, ठीक है, हमें प्रैक्टिकल वे में अपना नो एग्जाम्पल क्रिएट करना है, ठीक है, फिर लेट्स सपोज कि आप कोई डिग्री कर रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग बीबीए एंड यू आर परसुइंग बीबीए एंड बीटेक व्हाटएवर, सो आपको एक नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसमें पुट करना है, ताकि नो एग्जामिनेशन रिलेट कर पाए। Tool to catch catch success, catch success, useful student should study hard, study hard, and more and more focus more focus on education, education and student can do research, student can do research now digital education, digital education, so rapid
every platform, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एजुकेशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है एंड सक्सेस के दरवाजे खोलती है। ठीक है बे प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल में लिखना है, हमें बुकिश लैंग्वेज नहीं निकली, हमें अपनी लैंग्वेज लिखनी है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। हाँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, देन आई विल सक्सेस, फिर मैं सक्सेस होऊंगा, देन आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, इस तरीके से नहीं लिखना है। ऐसे लिखना है एजुकेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से। right? And key success. So basically, education should be education should be should be should be focusing सो हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं एंड अभी हमारे 2 पैराग्राफ और रह गए हैं। हमें लिखने हैं 250 वर्ड्स। कितने वर्ड लिखने हैं? 250 वर्ड्स। अब हम फर्स्ट तो हमने लिया अपना पर्सपेक्टिव, अब हम दूसरे का पर्सपेक्टिव लेंगे। paper into that education not that much important, that much important because person they
75 teach practical course and but we should that we लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है, यानी कि अपने थॉट प्रस्तुत करने हैं, हिंदी में कहते हैं प्रस्तुत करने हैं, एंड एक एग्जाम्पल भी देना है। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, ना कि थ्योरी नॉलेज पे, ना कि सब्जेक्ट नॉलेज पे। ठीक है, अक्सर यही तो हो रहा है। कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज में हम तो कराते हैं कि यार आप किसी के एग्जाम्पल लेंगे, आप मेरी एग्जाम्पल लेंगे। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था यार हम बीबी में एडमिशन लेंगे, सो भाई हम बिजनेस के बारे में सीखेंगे, एंड देन वी विल डू बिजनेस। सो भाई वहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। मैं बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बुरा है, एजुकेशन बुरी है। एजुकेशन बुरी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बुरा होता है। लिटरली मैं कह रहा हूँ एजुकेशन
नो आई डोंट नो इफ यू आर हिंदू इफ यू आर मुस्लिम, आप दोनों रिलीजन में देखेंगे ना तो इल्म बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। if you want success in if you want massive success, then you need to study, study, ओके। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, बट बहुत से स्टूडेंट कहते रहते हैं यार एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में क्या रहेगा, एजुकेशन बुरी नहीं है, पढ़ाई बुरी नहीं है, बट ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बुरा है। तो ये हम लोग ठीक नहीं कर सकते, ये भाई गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। एंड एंड मेरा पर्सपेक्टिव एंड मेरा थॉट, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि हर वीक में एक प्रैक्टिकल पूरे दिन की क्लास होनी चाहिए, जिससे अपना माइंडसेट चेंज हो, जिससे अपना माइंडसेट बिजनेस की ओर जाए एंड एंटरप्रेन्योर बनने की ओर जाए, एंड अलग अलग चीज़ें सीखें। पूरा दिन कम्युनिकेशन हो रही है, पूरे सेमिनार हॉल में बहुत पब्लिक बैठी है, और वन बाय वन, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेज है, लेट्स सपोज एक रूम है, अब इसी मान लें एक रूम, इसमें 1000 एक हजार लोग बैठे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, एंड ये है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग ब्रिलियंट रेसी। एंड सो लेट्स सपोज ये यहाँ खड़े हैं, ये स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यही स्पीच दे रहे हैं, अब हमारी बारी भी आनी चाहिए, हमारी हेजिटेशन भी दूर होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, सो दैट वी कैन कनेक्ट इजिली। इस तरीके से मैं, मेरा माइंडसेट ये कहता है कि हफ्ते में एक क्लास होनी चाहिए जो पूरा दिन कम्युनिकेशन पर हो, हाउ टू हाउ टू डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड हाउ टू डू बी लॉट ऑफ थिंग इन आवर लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई वांट। बट ऐसे कब होगा, जब अपनी गवर्नमेंट साथ देगी, एंड जब सब, आप समझने में कहना चाह रहा हूँ बस। अब एग्जाम्पल लिखे, अब एग्जाम्पल पे ध्यान दें, ठीक है। सो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे, यानी कि जैसे आप कहीं का एग्जाम्पल ले लें, आप जर्मनी के एग्जाम्पल ले लें, अमेरिका के एग्जाम्पल ले लें, एंड लग्जमबर्ग के एग्जाम्पल ले लें, कनाडा का ले लें, अदर फॉरेन कंट्री का ले लें। सो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ठीक है। वहाँ ये थ्योरी बेस्ड कुछ नहीं होता भाई, यहाँ तो बस हम कॉलेज जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्योरी, टीचर हमें, प्रोफेसर साहब हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मोबाइल पे देख के थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर वो बोर्ड पे राइट डाउन कर रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं उसे। सो ये क्या है, एजुकेशन। ये एजुकेशन, अब भाई घंटा एजुकेशन नहीं है, बस टाइम वेस्ट है भाई। सही है। सो बस मैं यही कहूँगा कि भाई बी मोर प्रैक्टिकल, सो बस अपने आप पे ध्यान दें, एंड बी मोर प्रैक्टिकल नॉलेज। कहाँ बातों में फंस गया मैं। Individualism should more of the practical knowledge and do the hard work and more creative. And student should focus on more practical knowledge. यानी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, उसे ज़्यादा सब्जेक्ट की ओर नहीं भागना चाहिए, ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं भागना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट should take action and 1 week class should go towards सो अपने हो गए फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट, एंड चेक करते हैं हमने कितने वर्ड्स लिखे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46। अब हम करते हैं कैलकुलेट, मेरे कैलकुलेट मान लो मोबाइल में कैलकुलेटर नहीं है, ऐसा हो सकता है भाई। सो 45 into 7,
गुड भाई। 280 वर्ड्स अब आज हमने कंप्लीट करे हैं। तो फर्स्ट पैरा ये है एंड देन ये है। तो 280 वर्ड बहुत है, ठीक है। आज में बस ये है कि बातों में भावनाओं में बाकी बाकी नहीं, भावनाओं में बह के मैंने बहुत बेसिक वोकेबलरी इसमें यूज़ कर ली। मुझे करनी थी एडवांस वोकेबलरी यूज़, जैसे कि एजुकेशन की जगह मुझे एकेडमी लिखना था, एकेडमिक एंड सो रैपिडली सही है। क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अनलॉक द की टू सक्सेस, ठीक है। बेसिकली ठीक है क्या कुछ हद तक सही लिखा है ब्रो, कुछ हद तक सही लिखा है भाई, कुछ हद तक सही लिखा है। क्रिएटिव टू सम एक्सटेंट, इसका मीनिंग जानते हैं आप? टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक, कुछ हद तक। एंड कहते नहीं किस हद तक तुम एग्री हो, यानी टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। तो हमने लिख दिया टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक लो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं जिसे किसके बारे में लिख रहे थे हम लिख रहे थे प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट, nowadays unemployment is increasing day by day because of lack of education and because of no practical knowledge is available in India, and so that's why yeah, fantastic why. सो सेकंड राइटिंग करते हैं एंड सेकंड टॉपिक मंगाते हैं, देखते हैं हम किस पे लिखेंगे अब। तो लिसनिंग हो गई एंड वन राइटिंग हो गई एंड अब लिखेंगे हम सेकंड राइटिंग। सेकंड राइटिंग, सेकंड राइटिंग। तो टॉपिक अब होगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक है टॉपिक लिख दिया, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की जगह some will more some will think that modern technology has made life more complicated, but the period has made life easier. Yeah, this one is good. You know, question number 2 है भाई, some some people think कि कुछ लोग सोचते हैं that कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो अब टेक्नोलॉजी चल रही है मॉडर्न, इसने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आप ये सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं एंड आप बहुत सारे बिजनेस भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? एंड वाइल जबकि अदर बिलीव यानी कि दूसरे बिलीव करते हैं डेट की इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर, इसने लाइफ को आसान बना दिया है। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। ये तो ईजी है भाई। देखो अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत से लोग सोचते हैं इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लाइफ को, ठीक है। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ ना, इसने ईजियर बना दिया है। आप एक वन क्लिक करके अपने कुछ भी मंगा सकते हैं, आप कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्लोबली रीच आउट कर सकते हैं। एम आई राइट? मैं सही तो बोल रहा हूँ भाई। आप अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। तो भाई ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अपनी बात को शेयर कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बात को शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अपने थॉट आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको लिखना है कि इसने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इजी बना दिया। सो मेरे नो एज फार एज आई नो, टेक्नोलॉजी ने लाइफ को इजी बना दिया। आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट यू नो आलसीपन भी बहुत बुरा है। आप जाके शॉपिंग कर रहे हैं ना कि आप वन क्लिक पे आपने क्लिक करा, जस्ट आपके पास आ रही है। अब तो भाई क्या कहते हैं, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट नहीं जानते हैं? ब्लिंक यानी कि पलक झपकना, तो उसी से बना है ब्लिंकिट, यानी पलक झपकते ही ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। यहाँ 5-6 मिनट लगेंगे, बस 5 to 6 मिनट आ लगेंगे,
आपके पास उतर आ जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। So how can you say that technology is not good for us and for our life? Technology is good. It depends on you. If you are a student, and definitely technology is good for you, because YouTube has a lot of content. On the YouTube, lot of content are available. You can watch it, you can learn it, and there are many university are teaching on YouTube, like Harvard University and Stanford University. No, I'm talking about big university. मैं बड़ी university की बात कर रहा हूँ, जो other foreign country में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो अपना कंटेंट जो है ना यूट्यूब पे डाल लेंगे। जो हम ये MBA करते हैं 2 साल का, BBA करते हैं 3 साल का, ये कंटेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलने भाई। यकीन नहीं आता, सर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपको प्रोफेसर प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल। बट हमें क्या करना है, हमें डिग्री के पीछे भागना है, हमें डिग्री चाहिए भाई, डिग्री। हमें ये पेपर चाहिए बस, जैसा पेपर भी वहां भाई, ऐसे ही है ना। यही तो गलत है। अब हम चलो बढ़ते हैं सेकंड उसकी ओर। Some people think that modern technology has made life more complicated, while others believe that it has made life easier. Discuss both view and give your own opinion. अपना opinion देना है। So पहले हम इस जो ये हमें क्वेश्चन मिला है, हम इसी फ्रेम करेंगे। हम अपनी एडवांस वोकेबलरी की यूज करेंगे और इसी फ्रेम करेंगे, फिर देन हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम पीपल थिंक, यानी कुछ लोग भरोसा करते हैं। मोबाइल बहुत हैंग चल रहा है यार, मोबाइल बहुत हैंग चल रहा है। क्वेश्चन आ रहा है ऊपर एकदम जस्ट फॉरवर्ड हो रहा है। चलो ठीक है। सो सम पीपल बिलीव, ठीक है, सम पीपल थिंक लिख रहा है, तो हम लिखेंगे थिंक की जगह हम बिलीव लिखेंगे, ठीक है। हमें बुकैब चेंज करनी है, हमें एग्जैक्ट बुकैब वही पुट नहीं करनी है, हमें बुकैब चेंज करनी है। सम पीपल बिलीव, लाइफ, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो फर्स्ट वाले ने कहा है कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वाइल का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। वाइल का मीनिंग होता है जबकि, ठीक है। वाइल अदर, जबकि, अदर, अदर पीपल ले सकते हैं, आप सिंपल ले सकते हैं अदर आर्ग्यू, ठीक है। अदर आर्ग्यू दैट इट हैज मेड लाइफ इजियर, लाइफ को उसने आसान बना दिया। इट हैज मेड लाइफ इजियर, जिसने लाइफ को आसान बना दिया। सो लास्ट में क्या लिखना था आपको? दिस एसे, ठीक है, दिस एसे विल डिस्कस बोथ व्यू बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाई आई बिलीव, ठीक है। ये लाइन आपको हर ऐसे में पुटअप करनी है, ठीक है। आप बना सकते हैं दिस ऐसे विल डिस्कस या दिस ऐसे विल टेल यू, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी वोकैबुलरी माइंड में आ रही है। दिस ऐसे विल डिस्कस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने पैराग्राफ ये जो लिखा है क्वेश्चन से ही रिलेटेड लिखा है, बस हमने वोकैबुलरी चेंज करी है, ठीक है। सो ऑन द
on the one hand, on the one hand, on the one hand, many people reckon that many people reckon that on the one hand, many people reckon that social media complicated for us in several ways. Okay. Like digital information, creativity, digital information, digital information, now it's now maybe technology, how to do what to do and how to do. So they have mental, they have mental also. Because social media,
and हाँ तो फ्रेंड्स हमने 4 पैराग्राफ लिखने हैं एंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ देखते हैं कितने वर्ड्स लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव 45 270 वर्ड गुड वाइफ 270 वर्ड तो देखते हैं कि हमने क्या वोकैबुलरी यूज करी है कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज करी है एडिक्टेड सही है टीनेजर या देखा आज एडवांस वोकैबुलरी हमने यूज करी है टीनेजर आज हमने चिल्ड्रन का यूज नहीं करा एंड जुवेनाइलाइज यंगस्टर की जगह हमने जुवेनाइलाइज वर्ड का यूज किया एंड nothing is wrong what's going to happen okay operate yeah सही है on the other hand many people deem that yeah life easier okay happening globally ठीक है successful opportunities is spelling OPportunities opportunities and product lightning and settle down okay follow life perspective PRSPCT सही है perspective की spelling सही है
I agree that an increasing created structure ST administrative structure चाहिए hard work you know that is good thing elevate ये elevate होने भी चाहिए to a great extent काफी हद तक ठीक है and came from language ठीक है भाई and so दो writing and दो listening हमने complete किए हैं इसमें vocabulary बस हमने 4-5 vocabulary का यूज़ किया एडवांस vocabulary का जैसे टीनेजर हो गया जुवेनाइलाइज हो गया एंड ट्रांजिएंट हो गया एंड पर्सपेक्टिव हो गया एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एंटी अपॉर्चुनिटीज क्या होता है ठीक है एंड सो आज का क्या कहते हैं उसे आज का प्लान कंप्लीट हो गया दो लिसनिंग दो राइटिंग नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे एक लॉन्ग लेक्चर एंड दो शॉर्ट वीडियो एंड सो यू नो हम किसके ऊपर बात कर रहे थे हम प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात कर रहे थे प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है सो यार यू नो एक बार के लिए सोचो कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैंने ये पूरी बुक पढ़ ली एंड यू नो 25,000 वोकेबलरी लेट सपोज मेरे याद है अब मैंने 25,000 वोकेबलरी मैंने याद करी तो इसका यूज़ क्या है जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँगा जब तक मैं इन वोकेबलरी को अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का या ऐसी यू नो वोकेबलरी का जब तक ये मेरे माइंड में नहीं आएंगे जब तक मेरी कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे ऐसी आप लेट सपोज कि आप यू नो यू आर परसुइंग BBA एंड यू आर परसुइंग BTech एंड सो यू नो सो आप देखते हैं कि नो प्रोफेसर जो होते हैं नो बोर्ड पे एक थ्योरी लिखते हैं मैं नो हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं सब अपनी जगह सही है ठीक है सब ना एजुकेशन भी बुरी नहीं है प्रोफेसर भी बुरे नहीं होते यू नो ये हंगर एक भूख पैदा हो गई है नो मनी की पैसा कमाने की बट हर किसी का इस पर ध्यान है ठीक है वो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो ठीक है कोई नहीं चाहता नो बडी वांट भाई कौन कौन चाहेगा यार आप भी तो चाहे हो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो या आपके पेरेंट्स चाहेंगे भाई आप कोई सी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ आप कोई सी भी बट या आप BSL नो BSL कह रहा हूँ आप कोई सी भी चले जाओ आप आइल्स करने कहीं भी चले जाओ आप जीनी से चले जाओ आप स्कूल ऑफ चले जाओ आप PW चले जाओ क्या आपको जो कोर्स को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे आपको फीस पे करनी पड़ेगी ठीक है तो यही मैं कहता हूँ कि यार बी मोर प्रैक्टिकल ठीक है एंड सो हार्ड वर्क करते रहें एंड आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं बट यू नो कॉलेज भी जाए बट यू नो मेरा माइंडसेट यू नो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया भाई यू नो मैं अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ यू नो मैंने बहुत से सेमिनार अटेंड किए हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं वो पिछली बात अपने सेमिनार जाने के लिए मैं भी हाल फिलहाल में यू नो हड़तल में एक सेमिनार हुआ था कोई कंपनी थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी मैं वहाँ गया था एंड बहुत से सेमिनार मैंने अटेंड किए एंड DTN कंपनी है उसके सेमिनार अटेंड किए यू नो वो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं यू नो वो क्या बोलते हैं ना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ वो क्या कहते हैं यू नो वो फर्स्ट क्या कहते हैं यू नो वो फर्स्ट ये कहते हैं कि अपना गोल जो है अपना माइंडसेट जो है हमेशा बड़ा रखें ठीक है लेट्स सपोज कि आप यू नो 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ठीक है मैं नो अल्ट्रा सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ ठीक है लेट्स सपोज कि 1 करोड़ मान लो ठीक है महीने की 1 करोड़ मान लो ठीक है सो आप ये मत सोचो कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे मेहनत करनी है ठीक है आपको कुछ नहीं करना है लिटरली ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपको क्या करना है आपको ये देखना है जो आपकी नज़र में सक्सेसफुल है जिसके पास 5 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए है इमेजिन करो जस्ट इमेजिन वंस उसकी लाइफ क्या होगी ठीक है वो क्या खाता होगा वो क्या पहनता होगा वो क्या पीता होगा वो क्या करता होगा वो किन लोगों के साथ बैठता होगा जस्ट इमेजिन ठीक है नो आप लिटरली में अल्ट्रा सक्सेसफुल होना चाहते हैं ठीक है तो आप इमेजिन करो नो आपको स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करनी है पैसे के बारे में नहीं सोचना है ठीक है पैसे के बारे में नहीं सोचना है बिजनेस के बारे में सोचना ही नहीं कुछ नहीं सोचना है
आप इमेजिन करो आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, एंड कंसिडर करो कि आपका कोई मेंटोर है, वो सक्सेसफुल है, तो उसे देखो कि वो क्या करता है एंड उसकी डाइट क्या है, वो कैसे खाता है, वो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता है और कैसे किन लोगों के साथ बैठता है, ठीक है, उसका कनेक्शन गॉड के साथ कैसा है, वो कब अच्छा बिहेवियर करता है, कब बैड बिहेवियर करता है। तो इस तरीके से आप उसे इमेजिन करें, ठीक है, आप उस पर ध्यान दें। आप आप उस 5 करोड़ वाले पर्सन पे ध्यान दें कि वो क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, वो क्या करता होगा, ठीक है, आप उस पर इमेजिन करें एंड डेफिनेटली आप अपने अंदर चेंजिंग महसूस करेंगे, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे। सक्सेस तो हर किसी को मिलनी है, चाहे आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, परसों नहीं 5 साल बाद मिलेगी, बट डेफिनेटली मिलेगी। बट जब अपनी हेल्थ होगी हम लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें, मेंटल पीस पे ध्यान दें, ठीक है, बॉडी पर ध्यान दें, तो हमें दूर तक जाना है। तो हमें मेंटल पीस हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें होनी चाहिए। हमें स्टार्टिंग में नहीं सोचना है मैंने कि पैसे की ओर नहीं सोचना है, हमें एक्सीलेंस के बारे में सोचना है। ये सब बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा। ये पैसा जो ये लैपटॉप जो है ना, आप सोच रहे हैं कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, आपको सोचना नहीं है, आपको बस वो पर्सन बनना है, वो आदमी बनना है। हाँ मैं ये खरीद सकता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सपोज ये फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑफिस है, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मैं इस काबिल बनूंगा कि मुझे मेरा होगा। ये सब चीज़ आपकी है, अल्लाह ने सब चीज़ आपके लिए बनाई है भाई। बट हम हमारी मेंटलिटी चेंज हो चुकी है, हम इसे नो टेंशन मान लेते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। ये सब चीज़ अपनी है भाई। ये बुक्स किसकी है, ये सब अपनी है, अल्लाह ने अपने लिए बनाई। बट बी मोर हम्बल एंड बी मोर जनरस एंड बी ऑथेंटिक। ओके, हमें अच्छा रहना है, अच्छा बन के रहना है, बी ह्यूमन बींग, अच्छा ह्यूमन बींग बनकर रहना है, ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी का बुरा करना है। हमें अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपना 100% देना है, ठीक है। सो बस यही मैं चाहता हूँ कि आप अपना 100% दें, अपनी लाइफ में खूब मचाएं, आप जो भी करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, नोबडी इज वॉचिंग यू, नोबडी इज वॉचिंग यू। हम सोचते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, अरे कोई नहीं देख रहा भाई, सब अपनी लाइफ में अपने बिजी हैं भाई। और तुम ये सोच रहे हो मुझे कोई देख रहा है, तो नोबडी इज वॉचिंग यू भाई, ठीक है। अपने अपने गोल पे फोकस करो, ठीक है। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, कहने दो, ठीक है। हमें पता है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अपना वर्क कंसिस्टेंटली करो, एक दिन हम नहीं बोलेंगे, हमारी सक्सेस बोलेगी, ठीक है। ये तो एक कोट है भाई, ठीक है। एंड सो वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग, यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आपकी है भाई, सही है। आप आईफोन चाहते हैं, आप लैपटॉप चाहते हैं, आप कार चाहते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये सब चीज़ आपकी है। बट आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है, ठीक है भाई। अल्लाह ने सब चीज़ आपके लिए तो दी है, सब कुछ आपके लिए तो है, बट आपको वो इंसान बनना है, वो इंसान आपको बनना है, ये सब चीज़ आपकी है भाई। अरे मेरा माइंडसेट क्या कहता है, यू नो लेट्स सपोज ये एक बुक है, ये 300 की बुक है, यानी 300 रुपये की किताब है। अब जब मेरे लेट्स सपोज कि मेरे यहाँ चोट लगी हुई है, ठीक है, मेरे ये चोट लगी हुई है, तो मेरे चोट जो लगी है, क्या मैं इस बुक को बेच नहीं सकता? जब मैं अपने आप खुद सही नहीं हूँ, तो मेरे इस बुक का क्या फायदा? लेट्स सपोज कि ये लैपटॉप है, एंड ये लैपटॉप है, अगर मुझे एक इंस्टीट्यूट में कुछ नॉलेज गेन करने के लिए मुझे उसमें एडमिशन लेना है, ठीक है, तो मैं ये लैपटॉप बेच नहीं सकता। तो ये मेरा लैपटॉप किस काम का, जब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जब मैं नॉलेज गेन नहीं कर सकता, ठीक है। अपना ये माइंडसेट क्रिएट करें, है ना, आपके पास जो भी है आप बस आगे लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं, नॉलेज गेन करते चले जाएं, ठीक है। ये सब एक लाइफ है, लाइफ हमेशा एक सीखने की एक जर्नी है, इसे सीखते रहें, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे एवरीथिंग, बट सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है, ओके। एंड सो टाइम बहुत हो गया है, एंड यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। एंड आज हम देखेंगे एक लेक्चर में सेंटेंसेस, अगेन हम सेंटेंसेस देखेंगे। लॉन्ग लेक्चर बनाने में मुझे टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत, तो इसलिए मैं सेंटेंसेस अभी फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस मैं आपको कराता हूँ इन बुक से रीडिंग करके,
पॉइंट को पॉइंट आउट करके फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके फिर मैं आपको कराता हूँ। वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में ना लें उन्हें, डोंट टेक इट इजी, ओके। एंड सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे।